Hello, very good afternoon. Am I audible? Am I visible? Okay, let me unmute. Sorry, everybody is mute. Okay, so now, very good afternoon. Am I audible, right, Usha? Yes, sir. Superb. So let people will keep joining. I'll start today's focus. Today, as I said, today is our last class for probability topic. From next week, we are going to start calculus. So today we'll focus on three things in probability. First is few more questions on independent events, different type of problems. Then we'll do concept of total probability. Yesterday we touched upon it, but today I'll explain you with concept of how the formulas or how it happens total probabilities. So yesterday we solved some problems, and then we're going to talk also about Bayes theorem. See, more on a theoretical approach, we are going to solve problems, and with the help of questions, I'm going to explain you what is Bayes theorem, what is law of total probability. Okay. First of all, let's start doing some questions on more questions on independent events. Yesterday I explained, and earlier classes also explained what are mutually exclusive. See, most of the problems happens on either mutually exclusive events or independent events. Quickly tell me, any one of you, what is independent event? We talked yesterday also. What do you mean by independent event? Usha, क्या होता है independent event? Sir, I think which is not mutually exclusive. हाँ, mutually exclusive or no, actually they are not. See, many people think कि mutually exclusive और independent event का आपस में relationship है. No. Dependent, independent, mutually exclusive, exhaustive. It's like that. So, sir, independent event will be like any two Outcome of one events event. occurring. No. It's not about outcome of one event does not affect the outcome of another event. Another event. इसका mutually exclusive से कोई concept संबंध नहीं है, right? Yes. Outcome of one event does not affect the outcome of another event. Independent event. A dependent event, outcome of one event affects the outcome of another event. Dependent, independent, ये concept. So let's solve a problem of what is. We'll solve 2 or 3 problems on independent events. Let me write a problem and then I'll explain you how it does mean. Suppose if I say a problem in maths, guys who joined late, it's all about we are going to solve problem on independent events first, and then total probability, laws of total probability, and then Bayes theorem. A problem in maths say is given to say 3 students whose chances of solving it are so 3 students. A one problem of maths is given to 3 students whose chances of solving it are, say, first student chance is 1/2, second student solving it is 1/3, and third student solves it 1/4 respectively. The question is very simple. What is the probability that problem is solved? Now, first of all, tell me, there are 3 students, say student A, student B, and student C. Now, Vasu, Usha, or anyone else, tell me probability of solving by student 1 or probability by solving student 2, is it dependent or independent? Independent. Independent, right? Because whether a first student can solve or not, second student, their probability doesn't depend on each other. They are totally dependent. So it may happen that first student can solve it. It can happen that second can solve it. Third can solve it. It can happen all 3 can solve it, or any 2 can solve it. Totally independent, right? That is we call it. These are independent events. So how we'll do this? What is the probability that problem is solved? Our objective is just to find probability that problem is solved. Does not matter who solves it. Whether first person solves it, second solves it, third solves it, whether all 3 solves it, whether any 2 solves it, first, second, third, first, that does not matter. Point is, problem is solved. So there are 2 ways to do this problem. One is we can say first solves it, or second solves it, or third solves it, or first or second solves it, or second or third solves it, or first or third solves it, or all 3 solves it. That is one way of doing it.
Other way of doing it, we'll do it reverse. If probability of solving, let me write here, probability of solving. I am just explaining, so say I'll say student 1, student 2. This is what the question given, right, everybody? Probability of solving a problem by student 1 is half, by student 2 is 1/3, and student 3 is 1/4. So to solve this problem, I'll do it other way. What is the probability of not solving it? Tell me, if probability of student 1 solving it is half, what is the probability of student 1 not solve it? What is 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2. It will also be 1 minus 1 by half. What is the probability of student 2 not solve it? 1 minus 1 by 3. Correct. 1 minus 1 by 3. So 2 by 3. What is the probability that student 3 else cannot solve it? 1 minus 1 by 4. 3 by 4. So what I found out is probability of not solving by first or second or third. The question is, what if the problem is solved? मतलब कि कोई भी एक solve कर ले. So we'll find out first probably the problem is not solved. Not solved कब हो सकता है? Probability is problem not solved at all. It is happen only one condition जबकि तीनों solve नहीं कर पाए, right? When we can say कि problem is not solved? Only when problem is not solved by 1, 2 and 3, all three of them. So first भी solve नहीं कर पाए. So, and they are independent events. So first cannot solve it, so half. And second also cannot solve it, 2 by 3. And third also cannot solve it. So this is the problem of probability of none of them can solve it. So 1 by 2. It's an independent event. So it's the product of all the three. Product of all these three. 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4. कितना हुआ? Solve it. 2 से 2 गया 1 by 4. So what is the 1 by 4? 1 by 4 is that problem will not be solved. और हमको निकालना है probability that problem would be solved. फिर से वही फंडा है. 1 minus 1 by 4. 3 by 4. Right? What we did is, question was a problem in math is given to 3 students whose chances of solving it are this. What is the probability that problem is solved? So first we found out that problem is not solved. So no solved का एक ही condition में. First also cannot solve it, second also cannot solve it, third also cannot solve it. So first cannot solve it half, so I put it half here. Second also cannot solve it, 2 by 3. Third also cannot solve it, 3 by 4. So probability of that problem will not be solved is 1 by 4. So definitely probability that problem is solved is 1 minus 1 by 4. Because they are independent events. So अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से करेंगे, इट विल वेरी लॉन्ग कि फर्स्ट ने सॉल्व किया, सेकंड थर्ड ने नहीं किया, और सेकंड ने किया, फर्स्ट थर्ड ने नहीं किया, और so many combinations. We don't need that. Best is do it reverse. Any question? Sir, in this the P of solving is also given, no? So we cannot use that. Here P of solving is given here. This is what question was. This was the question. Not solving, we have found it. Okay, sir. So we cannot use the probability of solving to get it. We can use it, Nishta. Nishta, you joined little late. So what? See, this probability of not solving is not given. That we found it. Yes, sir. ये नहीं किया question में. Question was a problem in math is given to 3 students whose chances of solving it are 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. What is probability that problem will be solved? Now your question is, can we use this? तो ये हमने कैसे यूज किया है? इसको यूज करने के लिए we found this. Probability not solving. But अगर तुमको सिर्फ यही यूज करना है कि solving it, तो देखो निष्ठा, it's an independent event. Independent event क्या होता है निष्ठा? बताओ. What are independent events? Independent probability, it is not dependent on others. हाँ, मतलब क्या है? मतलब ये है कि outcome of one event is not dependent on outcome of another event. या फिर outcome of one event does not affect outcome of another event. Yes. तीनों स्टूडेंट सेपरेट हैं,
तो स्टूडेंट 1 सॉल्व करता है और स्टूडेंट सॉल्व 2 करता है, वो दो आपस में डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? Independent. इंडिपेंडेंट है. सो दिस आर, सो आइदर वी कैन यूज ऑफ दिस, और अगर तुमको डायरेक्टली यूज करना है तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि 1 सॉल्व इट, 2 and 3 नॉट सॉल्व इट, और 2 सॉल्व इट, 1 and 3 डोंट सॉल्व इट, और 3 सॉल्व इट, 1 and 2 नॉट सॉल्व इट, और 1 and 2 सॉल्व इट, और 2 and 3, वो सारे कॉम्बिनेशन बनाओ, यू कैन गेट इट, बट देयर इज अ लॉन्गर मेथड. Okay, sir. उसमें सारा लेना पड़ेगा कि सिर्फ 1 ने सॉल्व किया, 2 और 3 ने नहीं किया, सिर्फ 2 ने किया, सिर्फ 3 ने किया, 1 and 2 ने किया, 1 and 3 ने किया, 2 and 3 ने किया, या फिर तीनों ने किया. उन तीनों को ऐड करोगे तो यू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व. Yes, sir. अदर वे ऑफ थिंकिंग इज कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. तो नॉट सॉल्व मतलब कि किसी ने भी नॉट सॉल्व, एक ही कंडीशन होगा कि तीनों ने सॉल्व नहीं किया तभी नो सॉल्व होगा, राइट? Yes, sir. तो तीनों ने नहीं सॉल्व किया, उसका प्रोडक्ट ऑफ दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग इट. Okay, sir. दैट इज मोर इजियर मेथड. Yes. एनी अदर क्वेश्चन? निष्ठा क्लियर है, राइट? Yes, sir. Super. Any other question, anyone? No, I want to give you one question you will do this time, okay? Similar type question of independent events. Suppose if I say A can solve 90% of the problem in a book. कोई भी एक बुक है, उसके 90% प्रॉब्लम A can solve. Okay? It's a very good, it's a very interesting question. B can solve 70% of the same book. Okay, I'm not writing this full. What is the probability that at least one of them will solve the problem? And problem is given as a random from any problem in the book, from the book, will solve the problem. बताओ. Given that a random problem is selected from a book, कोई एक book है मैथ्स का, A can solve 90% of the problems, B can solve 75% of the problems in the book. What is the probability that at least one of them will solve the problem? कोई भी एक random problem निकाला, what is the probability that at least one of them will solve? You have to first think is whether it is independent or dependent, and then you have to think how to solve. Solve it, and then we'll wait 30 seconds and then do it. Sir, 60%. 60%? कैसे? सर अगर सिर्फ परसेंट वाइज करें तो सॉल्व जैसे फर्स्ट ए कैन सॉल्व 90%, तो अगर सेम मेथड से करें जो पिछले मेथड में किया तो कैन नॉट सॉल्व हो जाएगा 10%. करेक्ट है. और बी वाले का सॉल्व है 70%, तो कैन नॉट सॉल्व होगा 30%. तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सबके लिए, ठीक है, फॉर एवरीबॉडी. वेट उषा, लिख लेते हैं यहाँ पे. सो पी ए मतलब है कि ए इज एबल टू सॉल्व, वो है 90%. 0.9 लिख दो उसको, या 90% लिख देते हैं, कंफर्टेबल है ज्यादा. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग इट 10%. करेक्ट. नोट ए लिख देता हूँ यहाँ पे, बार लगाना मुश्किल है. इस 10%, ये तो क्लियर है, ठीक है. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाला भी सेम. बी सॉल्विंग इज 70%. So B not solving it. It will be 30%. 30%. Okay. अब क्या करेंगे? So we'll find first probability of not solving at all. हाँ, कि कोई प्रॉब्लम लिया हमने, probability of problem not solving. Not solving कब आता है? जब दोनों सॉल्व नहीं कर पाए, राइट? Yes sir. When both cannot solve. तो पहले का है 10%. 10% मतलब कितना होता है? 0.1. 10% मतलब क्या होता है? 0.1, राइट? एंड 30% मतलब 0.3. अब ये हुआ 0.03. 0.3 नहीं हुआ, 0.03 हुआ, राइट? Probability of problem getting not solved is 0.03. क्वेश्चन है what is probability at least one of them solve, मतलब कि problem gets solved. You will
you will be surprised, but that is what it is. Correct? 97%, right Usha? Yes sir. सेम कंसेप्ट लगाया है, पर वहां पे ये यहाँ पे लोग मैथ्स में गड़बड़ कर देते हैं ये. वही मिस्टेक किया था मैंने. I know, so that is happened. Agree, Mahesh? Anybody any question on this? We'll do one more problem before we go to total probability. Let me select one more problem. Ask me if anybody any question. Okay, let's do another problem. It's a very interesting. This is a very important question. ये जो मैंने किया है ये the kind of problem is no. We'll do one more problem which is very important type problem which you generally get in exams. So everybody is okay. Shall I move on? Independent, large question independent. Let's see this. It says A speaks truth in 60% cases. ओके देखा होगा तुमने इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं. B speaks truth in 90% of cases. मैं ऑप्शन लिख रहा हूं बढ़िया. Now okay, it's a very, in what percent of cases are they likely to, there are two questions now, okay, we'll do one by one both, contradict each other in stating the same fact. Obviously in stating the same fact. And second question है agree stating the same fact. Think and tell me. First of all, think, is it dependent or independent event? मतलब ये है कि कोई भी कैसे A speaks truth 60% of the time, B speaks truth in 90% of the time. No, suppose they are narrating an incident. In what percent of cases they will contradict each other? Same incident they are narrating. In what percent of cases they will contradict each other? And in what percent of cases they will agree on the same fact? Means they are on the same line. Tell me, how will you do it? It's not as difficult, it's very easy. How shall we approach? Tell me the approach. Vatsal, Usha, Nishta, Mahesh, anyone? देखो concept ये है. First we can start wrapping up the absolute lives. Okay. Percentage of absolute lives. Okay. Which can be in first case 40%. And in So, second case it can be 30%. So probability हम लेते हैं A का truth का, right? A मतलब हम truth की बात कर रहे हैं तो 60%. So P of not A or A not or false is 40%. वो तो सही है. Similarly P of B मतलब P A is a event and A is speaking truth, ये मतलब है. And A is not speaking truth. ये 90% है. So B not speaking truth is 10%. ये तो clear है. Now it's all about condition. Both are independent events. Everybody agree? A झूठ बोलता है यानी B बोलता है कि दोनों आप डिपेंडेंट नहीं है, right? They are dependent. Independent, sir. So contradict कब होगा? Contradict एक ही केस में होगा जब A is telling truth. Suppose एक इवेंट ले लेते हैं या एक फैक्ट ले लेते हैं कि सर टुडे इज मंडे. सब एग्जांपल ले लेते हैं.
किसी इवेंट को दोनों बोल रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्ट जब करेंगे जब एक झूठ बोल रहा है और एक सच बोल रहा है, करेक्ट? सो केस 1, when they will contradict, when A speak truth, B speak lies, or A speak lies, B speak truth, correct? तभी contradict होगा. Everybody agree on this? So let me write. So A truth and B lies, or I am writing in English word that otherwise it's the same thing. Or A says lies and B say truth. So they will contradict each other for same fact. अब तो बिल्कुल सिंपल है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया A ट्रूथ का क्या है 60%, B लाइज का क्या है 10%, एग्री? और मीन्स प्लस A लाइज 40%, B ट्रूथ 90%. ये हो गया. कितना होगा इसका 0.06 प्लस 9436. So it will be 0.3640, 0.42 or 42%. Agree? Any doubt here? So they will contradict when एक झूठ बोल रहा है. अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं तभी contradict नहीं होगा, और दोनों सच बोल रहे हैं तभी contradict नहीं होगा. So 42% cases they are likely to contradict each other. Everybody agree on this? अब केस 2 बताओ क्या है. केस 2 तो वेरी इजी है. I'll put this on top. सर या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं एक हाँ. साथ, या दोनों सच बोल रहे हैं एक साथ. तभी दो एग्री करेंगे. And we are not talking about कि हाँ, point is दोनों सच या दोनों झूठ. Correct. So let me write that also. Case 2. अब केस 2 पे लिख लेते नीचे. केस 2 both truth or both lies. Then only they will agree on something. कर लेते. इसका प्रोबेबिलिटी होगा both truth 0.6 times 0.4 और both lies, sorry not 0.4, कितना है 0.6, 0.9 और both lies 0.4 times 0.1, कितना हुआ 9 into 6 54, so 0.54 plus 4 into 1 0.04, 0.58 और 58%. और वैसे 58% नहीं आना है, वो 42 आया तो, राइट? So in 58% of cases they will agree in stating the same fact. It doesn't mean they are speaking truth on that. It doesn't mean that. The question is not about that. Question is they will agree on the same fact. या तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे. No, ask me any question. If it's clear, then we'll move on to total probability. First, tell me, is it clear or any question here? If it's clear, just as easy. This is how independent works. Independent events are very easy. It all works like this. Okay. Now we'll go to laws of total probability. जो हमने कल example किए थे. Today I'm going to explain using the conventions. How we use convention to solve laws of total probability. Thank you, Nishta. And this kind of question are very important. Law of total probability. Yesterday हमने वो बॉल वाला क्वेश्चन किया था ना, ये बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए टू बैग बी एंड बी टू बैग ए और पिक फ्रॉम बैग वन. दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. और उसको मैं एक्सप्लेन यू टुडे विद द एग्जांपल how it works. Let me give you example on this now. Let me get some good problem here on this. One second, okay. So that I explain the concept also and
We'll do this, but we'll do some different problem here where give me 1 second. Okay. Law of total probability. I want to explain with some kind of a dice question, which is more easy. Okay, let's understand the law of total probability using some example. जो हमने कल किया था. Let me write a question first. It's very, very easy. Theoretically looks very difficult. Using in questions, it's very, very easy. Suppose if I say there are two bags, and I'll use the events here so that you know what events are there. Okay. Bag 1 contains 3 black, 4 white balls. Okay. This is what bag 1 contains, and the other bag contains, bag 2, suppose say here, bag 2 contains suppose 4 black 3 white. Okay, 4 black 3 white. और इसी पे डिपेंडेंट है, means similar if we extend it becomes the Bayes theorem, reverse way. 4 black 3 white. Now the another thing, a die is cast or a dice is rolled. Okay, rolled I'll say, not cast. If it turns, and this is little deep difficult problem, like concept in terms of deep. If the face turns 1 or 3, if it turns 1 or 3, a ball is taken from first bag. Okay, and else means if anything else comes, else a ball is taken from bag 2. Find the probability of choosing a black ball. कल हमने ट्रांसफर वाला किया था, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था. दिस इज मोर है. So I'll explain the problem, I'll explain the concept, and then solution. Solution is very easy, so don't try solution because focus is on the concept. See यहाँ पे, see this total probability depends upon the conditional probability. First of all, there are two bags with the given number balls, black and white. One more thing you are doing is you are rolling a dice. Dice में 1 या 3 आया, you will take a ball from bag 1. और dice में अगर 1 3 के अलावा आया, मतलब 2 4 5 और 6, तुम बॉल बैग 2 से निकालोगे. क्वेश्चन ये है किससे भी निकालोगे, फर्स्ट से या सेकंड से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल. ओके okay, Lohit Vijay started with the total probability, independent probability we finished. Just focus on this now. The question is how this total probability thing works. Now I'll tell you, let's define some, we have to define some events and you define how the law of total probability will work. Okay, let's see. First of all, let me define event in the green here, and then I'll make a diagram also. First of all, I'm saying
it all depends on what die is rolled, right? The picking of a ball depends upon dice में क्या आ रहा है. So define. Suppose my E1, say my E1 is the event that we are getting. Die shows 1 or 3, ठीक है. और E2 इवेंट है, डाई शोज क्या शो करेगा? डाई 1 और 3 नहीं आएगा तो 2, 4, 5 या 6, करेक्ट. डाई में 1 से 6 आता है, तो 1 और 3 में E1 को इवेंट मान लिया कि डाई शोइंग 1 और 3. E2 को मान लिया हमने डाई शोइंग अदर देन 1 और 3, मतलब 2, 4, 5, 6. अब क्वेश्चन किस चीज का है? प्रोबेबिलिटी चूजिंग ए ब्लैक बॉल. अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज व्हाट पीपल डू मिस्टेक. द मेन क्वेश्चन इज अबाउट नॉट अबाउट डाइस क्या शो करता है, व्हाइट ब्लैक करता है. मेन क्वेश्चन इज अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए ब्लैक बॉल. तो उसको मानते इवेंट है, क्योंकि इसी का टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है. ए इज इवेंट इज you are saying okay choosing a black ball. Okay, let me see where it is. What is that? Ball drawn is black. So मैं हमने क्या डिवाइड किया? E1, E2 and A. E1, E2 is always be the conditional event. A will be the total probability event. कि किसी से भी निकालो E1 से E2 से, मतलब बैक 1 या बैक 2 से, finally I need the black ball. So A is the ball drawn is black. Now tell me, before we go to, what is the probability of this E1? सब कुछ भूल जाओ. E1 event है, dice shows 1 or 3. What is probability of getting 1 or 3 in a dice? बोलो ऑडियो पे लोग. 2/6. 2/6. 1 or 3. Total outcomes are 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So probability of E1 is 2/6. What is probability of getting E2? 4/6. 4 outcomes, 2, 4, 5, 6. So probability of E2 is. So same concept you can apply anywhere. 4/6. ये हमारा हो गया probability of E1 and probability of E2. हमको निकालना है probability of A, the total probability of A. अब मैं I'll explain you with the diagram. Okay. Suppose ये तुम्हारा PE1 है, ये तुम्हारा PE2 है, and now I'll explain you what this means. This is what you have to find out. We have to, and that is my event A. This is my, sorry, that is my event of P of E. Okay, let me write with this. No, this can apply to not only 2 events, there can be n number of events. P of E1. P of E1 से हो सकता है या P of E2 से हो सकता है. And what is this? No, I'll write something here which is the most important thing. What will come here and what will come here? Convention is this. Probability of happening A. ये देखो मैंने क्या लिखा है. इसका मतलब ये होता है probability of happening event A provided that a condition that E1 has happened. हमारे केस में I'll say probability of drawing a black ball when dice shows 1 or 3. That is what meaning of this. मतलब ये है कि this is the probability of A, E1 is happened. तो dice में अगर 1 और 3 आया, then what is the probability of getting a black ball? Similarly यहाँ पे होगा probability of A provided that E2 has happened. मतलब कि I am drawing a black ball and I am assuming the die shows 2, 4, 5 or 6. That is the main concept of this. And the total probability. कल हमने ये एग्जाम बिना concept के किया था, बिना formulas के किया था. We are going to do same thing today also. But let me first do this. So अगर हमको ये event निकालना है, what is the probability of our given event A? Let me make this red. Then it will be very easy. First we'll say what is the probability event पहला वाला हुआ times what is probability of, actually that's what we exactly did yesterday, plus probability of, you also will feel that कि
theoretically it looks more difficult, practically it's very easy. A by E2. That is the law of total probability. मतलब हमको इवेंट ए चाहिए, वो चाहे E1 के रास्ते से हो चाहे E2 के रास्ते से हो. It can be many things, E1, E2, E3, E4, E5, 6. अगर मैं 5 कंडीशन बना दूं कि 1 आए तो ये, 2 आए तो ये, 3 आए तो ये, 4 आए तो ये, that's fine. Law of total probability says finally I need the event A to happen. What is probability event A? So probability law of total probability says probability event A will be probability event A E1 times what is probability of A E1 happened plus probability event E2 assuming that E2 happened what is probability of A. अब that is theoretical concept. इसी को आपको simple terms में बोले तो बहुत easy है. जो हमने कल किया था. If I solve the same problem, अगर हमको probability अब निकालना है जो क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे? एज्यूम करो कि हमारा E1 हुआ, मतलब कि 1 और 3 हुआ, मतलब बैग 1 चूज हुआ है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? बैग 1 चूज होने का 2/6 है, राइट? यहाँ पे अगर टोटल प्रोबेबिलिटी को भूल भी जाए तो हमने क्या किया था? या तो बैग 1 आएगा या बैग 2 आएगा. सपोज बैग 1 आया तो बैग 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6, राइट? फर्स्ट वे चूजिंग बैग कि बैग 1 आ रहा है, बैग 2 आ रहा है, तो सपोज से बैग 1 इज कमिंग, सो 2/6 लिखा है यहाँ पे मैंने. अब बैग 1 हो गया, अब बैग 1 हो गया तो उसमें से व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ब्लैक बॉल? बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1? 3/7, राइट? 3 ब्लैक है, 4 व्हाइट है, तो टोटल बॉल्स आर 7, सो 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमने बैग 2 लिया, बैग 2 का क्या है? 4/6. अगर बैग 2 लिया है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2? 4 ब्लैक है, 3 व्हाइट है, तो 4/7. कल भी हमने इसी किया था, ट्रांसफर किया था. जब जो ट्रांसफर करने वाला कंसेप्ट है वो हमारा हो गया कंडीशनल वाला, और जब हम लोग फाइनल प्रोबेबिलिटी लिख रहे वो हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी. कल भी हमने ये किया था ना कि ट्रांसफर किया, पिक किया, ट्रांसफर किया, पिक किया. टुडे आल्सो फर्स्ट वी selected a bag 1 or 2 depending on the dice. तो ये है बैग 1 आया 2/6, फिर बैग 1 में से निकाला, बैग 2 आया, बैग 2 से निकाला. इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर. कितना हुआ? 6/42. आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग. एंड 16/42, 22/42, या फिर 11/21. दैट्स इट. So answer is 11/21. No, I'll explain one more thing here, means last thing, and then any question you ask me. If you don't really think in a theoretical perspective this and this, you can do directly this question by question क्या है? A dice rolled. सारा डिपेंड करता है डाइस पे क्या आता है. डाइस पे 1 और 3 आता है तो इस बैग से लेंगे, और डाइस पे 1 और 3 नहीं आता है तो इस बैग से लेंगे. पहला केस ले लिया, दिस इज द फर्स्ट केस कि डाइस पे 1 और 3 आता है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग डाइस पे 1 और 3? यही है, राइट एवरीबॉडी? तो डाइस पे आ गया हमारा 1 और 3. अब 1 और 3 आया मतलब यू पिक फ्रॉम बैग 1, तो यहां से बॉल निकालो. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ब्लैक बॉल हियर? 3/7, so 3/7. और दिस इज द और बैग 2 लिया. बैग 2 कब लेंगे? जब वी डोंट गेट डाइस पे 1 और 3, वी गेट एनीथिंग एल्स. तो एनीथिंग मतलब डाइस पे 2, 4, 5, 6 आ सकता है. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2, 4, 5, 6? 4/6 इनटू, अगर बैग 2 सिलेक्ट किया है तो बॉल यहां से निकला है ब्लैक, तो 4/7. तो और कंडीशन, दिस इज व्हाट टोटल प्रोबेबिलिटी मींस. कल भी हमने यही क्वेश्चन किया था, बट डायरेक्टली you can do directly if your concept is clear. Law of total probability होता है कितने भी सारे तरीके हो आने के, finally you need the probability of getting event A. No, please ask me question. How many of you are absolutely clear? How many of you doubt? It's a very simple question. Looks, see, books को अगर मैं दिया था ना PA1, PA2, PA3, इसलिए become too difficult. Clear and Ishta, superb. किसी को डाउट है और? Anybody any doubt? We are going to one more question on this. 2-3 questions more.
और उसके बाद विल एक्सटेंड द सेम थिंग टू बेस। बेस थ्योरम इसका उल्टा है। बेस थ्योरम वो बोलता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इतना है तो निकालो कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि वो बैक 1 से आया है। विल डू दैट। बेस थ्योरम इज जस्ट दैट, नथिंग एल्स। क्लियर है? शैल वी मूव ऑन? Anybody, any question? Shall we move on? See, superb. Usha, all good? So like question करते हैं अब। It's a very interesting question. ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। Let me write a question. Law of total समझ में आ गया? E1 से हो, E2 से हो, E2 से, E4, E5, कितने E2 का end से हो, total probability will be sum of all this probability. So suppose a question is, and I believe most of you will do it, but let's do it. It says in a Bolt factory, very popular question, in a Bolt factory, and same question I'm going to extend for the Bayes theorem. Machine ABC, it's a big question. Machine A, B, C manufactures. You can take a screenshot also after this. Manufacture respectively 25%, 35% and 45%. 40%. कितना हो? 35, 40, 60, 40% of the total bolts. मीन्स क्या हुआ? जो भी टोटल बोल्ट्स बनते हैं फैक्ट्री में 25% मशीन ए मेक्स, 35% मशीन बी मेक्स और मैन्युफैक्चर्स, एंड 40% ऑफ दैट मशीन सी मेक्स आउट ऑफ द टोटल बोल्ट्स। ठीक है? ऑफ देयर आउटपुट, मतलब आउटपुट ऑफ मशीन एबीसी 5,4,2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। मतलब क्या बोल रहा है ये? आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन इटसेल्फ हियर कि मशीन ए प्रोड्यूस 2500 बोल्ट, उसमें से 5% आर डिफेक्टिव। मशीन बी प्रोड्यूस 3500 बोल्ट, उसमें से 4% आर डिफेक्टिव, एंड मशीन सी जितना प्रोड्यूस करती है उसका 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। Now a bolt is drawn at random from the product. जो भी आउटपुट आया उससे एक बोल्ट निकाला है। What is the probability that bolt is defective? यह है क्वेश्चन। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि मशीन ए से आया, बी से आया, सी से आया। क्वेश्चन है what is the probability that bolt is defective? Now if you apply law of total probability, it's very easy question. I give a few seconds for you to think over it, then I'll explain step by step. Yes Vasu, finally add करेंगे, पर कैसे वो देखो, वो करना, वो देखना है। First you define the events. मैं आपको एक हिंट दे देता हूं so that you know, actually just to, you don't need to write all this, but in exam you have to write multiple choice. मैं बोल देता हूं आपका E1 है, यहाँ पर E1 इवेंट है, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। E2 ले लो, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। E3 ले लो, तो ये 3 कंडीशन है। अगर 4 होते 4 ले लेते हैं, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। और ए को इवेंट ले लो कि बोल्ट इज डिफेक्टिव, वही तुमको निकालना है। फाइनली कंडीशन इज बोल्ट इज डिफेक्टिव। बताओ कैसे करेंगे? ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन करो। इट्स अ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और कुछ नहीं है। So in this we can bolt manufactured by A is like 25% and the defective is 5. So if 25% is कंसेप्ट एक्चुअली वही है। 0.25 into 5 plus 0.35 डायग्राम into में शो करना है। 0.4. यू आर राइट, डायग्राम में शो करना। तो ये तरीका है कि, और इन तीनों का यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है।
इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ. You are right. It's all about this. हमारा A आ रहा है. सर P of A by E1 ऐसा होगा क्या सर? 5% of होना वही, हाँ होना वही है. ये हमारा हुआ P of E1. 25 by 100 होगा. हाँ. मतलब एक्चुअली इसको कंसिडर समझाना टाइम लगता नहीं, तो क्वेश्चन तो ओरल है, राइट? ये E1 E2 3 है और ये हमारा हुआ P of A by E1. मैं वही तो बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल इज मोर डिफिकल्ट, अदरवाइज वेरी इजी है. ये है P of A by E2 और ये हुआ P of A by E3. यू आर राइट. फाइनली हमको चाहिए, मैं लेकिन लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि बेस थ्योरम में ये समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है. और फाइनली जो मिल रहा है ये P है. P of A. मतलब ये इवेंट है यहाँ पे, जो हमारा जो ये बात कर रहे हैं हम लोग सारी ना, ये बात करेंगे इवेंट है कैसे होगा. इवेंट है तीनों से हो सकता है. तो कंसेप्ट सारा वही है कि अगर P of A निकालना है तो देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे अगर P of A निकालना है तो क्या होगा? P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 by P of A by E3. करेक्ट? टोटल प्रोबेबिलिटी का लॉ यही है. और एक्चुअली हम लोगों को E1 E2 एक्चुअली तुम लोगों को एग्जाम में लिखना पड़ेगा इसलिए, अदरवाइज मल्टीपल चॉइस में तो जरूरत ही नहीं है. तो क्या होगा? व्हाट इज P of E1 की बोल्ड मैक्सिमम बाय A 25%, राइट? 1/4. तुम लिख लेते हो यहाँ पे 1/4 करें उसको 25% कर दे, जैसा भी करना है. 25% टाइम्स P of A by E1. A by E1 मतलब A by E1 का मतलब क्या है? मतलब कि बॉल डिफेक्टिव आया है और वो A ने मैन्युफैक्चर किया. E1 मतलब A ने मैन्युफैक्चर किया, राइट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ A by E2? कि डिफेक्टिव बोल्ट आया है और वो मैन्युफैक्चर E2 से हुआ है, मतलब कि B से हुआ है. और A by E3 मतलब बॉल डिफेक्टिव आया है, वो मैन्युफैक्चर किया E3 मतलब C ने. दैट इज द मीनिंग. तो व्हाट इज द P of A1? 5% दिया उसमें, राइट? या फिर इसको सही बोल वैसे ही कर लेते हैं 25 by 100. तो इसको सिंप्लीफाई इनटू 5 by 100, यही बोल रहे हो ना? प्लस P of E2 35% इनटू E2 से आया 4% प्लस क्या है 40% और 2%. तो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी है. नथिंग एल्स, राइट? तो जो शुरू बोला सर सबको मल्टीप्लाई करके ऐड ही करना है. क्यों करना है? दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? एग्री एवरीबॉडी? और आई एम नॉट गोइंग टू डू मच हियर. व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डायरेक्टली ऐड. वो पॉइंट वगैरह नहीं करने वाला हूं. 25 into 5 125 प्लस 35 into 4 35 70 140 प्लस 40 into 2 80. ये सभी होना है ना ऊपर. ये कितना होना है? 100 और 100, राइट? ये आना है फाइनली. कितना हुआ? 140 और 80 220 320 345 345 बाय 100. या फिर इसको अगर परसेंटेज में करें तो 2 जीरो गया, देखिए 3.45% इज द प्रोबेबिलिटी. Now tell me, anybody got 3.45% or not? या फिर 0.0345. ये कैलकुलेशन तो you can do it yourself. Main point was this. और ये भी इससे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एकदम इजी है. Anybody, any question here? Is everyone okay on this? Because I am going to use the same example to do the Bayes theorem. देखो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है. जो भी कंडीशन दिया है उन सब कंडीशन का प्रोबेबिलिटी विद द मेन इवेंट प्रोबेबिलिटी, उन सब का एडिशन इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. जैसे हमने किया E1 into P E1, E2 into P of A by E2, E3 with P by E3. Anybody need any more explanation on this? Tell me quickly. No, I'll explain what is the Bayes theorem. B-A-Y-E-S, Bayes theorem. CC, Nishta is CC. Guys, write CC at least or ask me doubt.
I'll explain same thing for Bayes theorem. कहाँ है Bayes theorem? Use the same question so that it will save time and it will also know it will continuity. Okay. हाँ ये example लेंगे वापस. I'll just modify a little bit this question. Okay. And I'll explain Bayes theorem. See, theoretical Bayes theorem is difficult, but if you talk about the example wise, instead of using A1, E1, E2, E2, AN, we'll use the numbers here. So I'll modify the same question to explain the Bayes theorem. Let me. Question is in a bolt factory AB by this 25, 30, 40, 5, 4, 2. Bolt is drawn and a bolt is drawn is found. A bolt is drawn from the product. Okay. Only last line of the question will change to explain. If the bolt drawn is defective, what is the probability? And you will really love this, guys. Because Bayes theorem people take so much time to understand. You love how easy it is. What is probability that it is manufactured by machine B? What I'm trying to tell you is, what law of probability में क्या निकाल रहे थे हम लोग कि probability of a bolt bill defective, चाहे A ने produce किया हो, B ने किया हो, C ने किया हो, right? In Bayes theorem kind of questions or in this kind of question where Bayes theorem applied, वहां पे क्या हो रहा है कि suppose you picked a bolt which is defective, so what is probability कि वो machine A ने बनाया या B ने बनाया या C ने बनाया? In our question, suppose the bolt you picked is defective, so what is the probability that it is produced by machine B? इस type के question में you apply the concept of Bayes theorem. So I'll keep everything as it is and I'll remove the other thing. Okay. So that I'll give the space. Let me remove this part. Event हम लोग same define करेंगे. इसको ये काम आने वाला है. Shall I remove the diagram because diagram anyway you know it, right? Shall I remove this? And take a screenshot after that. अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि अगर डिफेक्टिव बोल्ट आए और वो बोल्ट मैन्युफैक्चर बी ने किया हो, कंडीशन में कंडीशन, राइट? सो व्हाट इट हाउ इट हैपेंस दैट आई विल टेल यू. सो हमको निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, राइट? ये निकालना है. प्रोबेबिलिटी वो इवेंट सारे सेम है. E1 मतलब कि बोल्ट ए ने मैन्युफैक्चर किया है, E2 मतलब बोल्ट बी ने मैन्युफैक्चर किया है, C मतलब E3 मतलब C ने मैन्युफैक्चर किया है, और A मींस द बोल्ट डिफेक्टिव है. तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि डिफेक्टिव बोल्ट आया और वो E2 ने मैन्युफैक्चर किया. दैट इज PA by E2, राइट? यस सर. अब क्वेश्चन क्या करना है हमको? हमको ये नहीं निकालना है. हमको ये तो हमको पता, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है. हमको निकालना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ये निकालना है हमको, राइट? प्रोबेबिलिटी दैट, देखो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय E2 मतलब कि मशीन बी, प्रोवाइडेड दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव. ये निकालना है हमको. पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे A by E2 तो पता था हमको. यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी and that bolt is defective. तो कंडीशन ये हो गया. और बेस थ्योरम बोलता है इसको निकालना है, तो it's a direct way, it's a direct concept of formula, you can say. I'll write it here. I'm not writing in the form of this. Let me write it. It will say it's a probability of E2 times probability of A by E2, और डिनोमिनेटर में वही आना है जो हमने पिछली बार किया, टोटल प्रोबेबिलिटी सारा P(E1) into A by E1, P(E2) into A by E2, वही करना है. बिल्कुल यहाँ पे वो लिखूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल दो, लिख दूं. टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट वन, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला, मतलब P of A, P of E1 into P of, let me write this again. So
It is nothing but P of E1 times P of, ये हमने पिछली बार किया राइट, पिछले क्वेश्चन ये किया हमने, प्लस एक्चुअली बेस थ्योरम का मीनिंग यही है पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्या आएगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 प्लस probability of E3. Okay, let me put this little more here. Into probability of A by E3. एक बार बस इसको समझ लो कि what is this? This is what Bayes theorem means. Bayes theorem means अगर हमको निकालना है what is probability of E2 provided A has happened. In our case, what is probability of happening कि machine bolt is picked from or manufactured from machine B provided bolt is defective. तो होगा probability of E2 times probability of A by E2. और ये तो नीचे total probability जो हमने पिछली बार की. अगर मशीन उसने C का पूछा होता यहाँ पे आता E3, यहाँ पे भी E3, यहाँ पे E3. मशीन ए का पूछा होता E1, E1, E1. इसी को एक्सटेंड कर दो जितने भी सारे इवेंट्स हैं, दैट इज व्हाट बेस थ्योरम. अब तो डायरेक्ट है. एवरीबॉडी एग्री? अगर इसको सॉल्व करना है अब तो कैसे करेंगे? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? टेल मी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? मतलब बॉल मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, कितना है वो? 35%. What is probability of A by E2? What is probability of A by E2? Guys, what is probability of A by E2? 4 by 100 sir. कि 4% जो B के डिफेक्टिव है. जी. डिनोमिनेटर में क्या आना है? सारा वही जो हमने ये जो लिखा है यहाँ पे PA राइट, ये लिखा है ना नीचे. Yes. इसलिए मैंने उसको रखा है अभी तक. ये पूरा का पूरा, लेट मी रिमूव दिस नाउ. ये पूरा इसके नीचे पे आना है. सॉल्व करेंगे तो विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ bolt picked from machine B and it's a defective bolt. So what Bayes theorem is? Bayes theorem is reverse of what we do total probability. Total probability निकालते हैं. What is probability? A1 से आए, E2 से आए, E3 से आए. Bayes theorem says कि चलो defective आया है, तो किससे आया है? So is it clear? It's a very simple thing. It's very simple thing of applying this thought here. इतना सही है बस. Clear है? Everyone? Bayes theorem? I'll explain again. अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे what this means? Usha, can you explain what is the significance of this? P2 by मतलब क्या होता है? Because if you understand that, it's very easy. What is P2 by A? Are you there? Want to explain? Oh, Usha, look. Nishta, you want to explain? Yes, sir. What is P2 by means? Probability that the bolt is manufactured by B and also it is defective. And also defective means we already know that bolt is defective. Condition is correct. अगर यहाँ पे क्वेश्चन मशीन C होता, Yes, sir. if would have this question become machine C, तो यहाँ पे E3 we'll by make E. it E3, E3 by and we'll make this also as E3, E3. and we also make E3. नीचे तो सेम रहेगा total probability वाला. And this one we already explained a lot. That's very good one. Anybody, any question on this? So see, we started with the basic probability. Remember for last week? Then we talk conditional probability, independent, mutual exclusive, and then finally total probability and Bayes theorem. That should really give you very good confidence of how probability is solved. कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई डाउट है? कुछ? Probability is okay now. Next week
We'll start next few weeks. Good, integration, differentiation are big, very big, and we are going to do it. It's a very challenging topic, and we are going to take up the challenge. We are going to solve. We'll start with differentiation, and then integration, and then differential equation. Solve calculus for next few weeks now. Okay, and a lot of people feel calculus is difficult, which is not. It's all about we start making the concepts, right concepts of differentiation and integral calculus. Then differential equations are very easy. Okay. Shall we close this now? So thank you everyone. See you next Saturday. Thank you. Calculus. Bye bye.